तो फ्रेंड्स हेलो। पिछले शॉर्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का सम डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो आंसर इज नो। कभी कभी दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का सम एक कंटिन्यूअस फंक्शन भी होता है। तो कंसिडर दीज टू फंक्शंस एफ एक्स इज सच डिफाइंड दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स इज लार्जर देन जीरो and fx equals 0 if x equals 0 and fx equals 2x minus 1 if x is smaller than 0. So here is the graph of this function. You can see that this is discontinuous at x equals 0. And now consider the function gx equals x minus 1 if x is larger than 0 and gx equals 0 if x equals 0 and gx equals 3x plus 1 if x is smaller than 0. And here is the graph of gx. You can see here that gx function is discontinuous at x equals 0. Now consider fx plus gx. We know fx plus gx equals f plus gx. If fx is defined in an interval d1 and gx is defined in an interval d2, then fx plus gx equals f plus gx in an interval d, which is d1 intersection d2. So here in an interval d, fx plus gx equals f plus gx and f plus gx equals x square plus x if x is larger than 0, because we add here and here, so we get x square plus x, and we add here and here and we get 0, and we add 3x plus 1 and 2x minus 1 and we get this. And now this is the graph of fx plus gx, and you can see this is continuous at x equals 0. So the sum of two discontinuous functions fx and gx, the function is continuous.